Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is lecture number 1, that is from chapter number 5, cell cycle. Cell cycle is firstly its definition. Cell cycle is the process in which a cell produced and then it undergo mitosis or meiosis and then produce the new cell. सेल साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, एक सेल का, कि जब सेल खुद प्रोड्यूस हुआ उसके बाद उसने क्या किया, डिवीजन के फेजेस एम फेजेस के अंदर एंटर होकर डिवीजन की माइटोसिस मेयोसिस के थ्रू और फिर क्या किया, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर ली. दिस इज बेसिकली द cell cycle. And for next is, there are two major phases of cell cycle. Firstly is the interphase and the second one is M phase. And interphase is the phase of प्रेपरेटरी फेज. इसको इंटरफेस को प्रेपरेटरी फेज कहते हैं, जिसमें सेल खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द डिवीजन. एंड इंटरफेस फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 phases, that is G1 phase, S phase and G2 phase, while M phase is the division phase in which cell divides itself by the process of mitosis or meiosis. Next is the G1 phase of interphase. In G1 phase, after the cell produced, cell simply starts its life cycle by entering into G1 phase, and in this phase cell increases its supply of protein, increase the number of its organelles and grow in size. कि G1 phase के अंदर कुछ वो प्रिपरेशन कर रहा है ना अपनी डिवीजन के लिए, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो कि वो प्रिपेयर करेगा. Number 1 is protein supply, number 2 is increase the number of organelles, and number 3 is grow in size, and the fourth one is that it also synthesizes the enzyme that is required in the next phase, that is S phase, for the duplication of chromosome. So there are 4 main things that are prepared in the G1 phase. Next is the S phase. In this phase cell duplicate its chromosome and as a result each chromosome consists of 2 sister chromatids. कि जो हमारे पास chromosome है, ये देखिए, in left side you can see this is a single chromosome consists of only one sister chromatid. So how it will divide during the mitosis phase, mitosis or meiosis, okay, so it has to duplicate itself for the division. So in S phase this single chromosome will duplicate, and after the replication it will form 2 sister chromatids, and then they will divide in the process of mitosis. That is why S phase is very important. Next one is the G2 phase, and in G2 phase cell prepares proteins that is very essential for mitosis, mainly for the production of spindle fiber. कि अब इसके अंदर सेल क्या करेगा, एक प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, और वो प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों यहाँ पे करे, क्योंकि ये प्रेपरेशन है एम फेज के अंदर एंटर होने से पहले, मीन्स कि डिवीजन करने से पहले. तो डिवीजन के टाइम पे हमें स्पिंडल फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माइटोसिस में, ठीक है. तो जो उस स्पिंडल फाइबर को प्रोटीन की सिंथेसिस कर, स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस के लिए जो हमें प्रोटीन चाहिए, वो बेसिकली G2 फेज में प्रिपेयर होगी. नेक्स्ट वन इज द G0 phase. Now after the G2 phase cell enters into the M phase and then division will start, but some cells temporarily or permanently stop dividing and they have said to enter a state of quiescence that is known as G0 phase. अब होता क्या है कि कुछ सेल ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, डिवीजन नहीं करते. इंटरफेस के बाद फर्दर डिवीजन का प्रोसेस होना होता है एम फेज, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, जो जिन्होंने डिवीजन करनी ही नहीं होती, या तो हमेशा के लिए नहीं करनी होती या फिर टेम्परेली, ठीक है, तो उनको कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं G0 फेज. नाउ in there are different kinds of G0 phases. Some cells remain in G0 for indefinite period, that is the neurons. And the number 2 is some cells enter G0 phase semi permanently, some cells of liver and kidney. जैसे कि हमारे पास लिवर और किडनी क्या है, ये क्या है, सेमी परमानेंटली का मतलब क्या है कि ये हमेशा के लिए नहीं होते. अगर उनको कहीं पे किसी भी लाइफ स्टेज के ऊपर डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर उनको ज़रूरत नहीं होती तो वो एक किस्म का परमानेंटली G0 फेज के अंदर ही रहते हैं. अब जैसे कि लिवर और किडनी हमारे जब अगर कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, लिवर या किडनी में कोई सेल्स जो हैं वो
वहाँ से स्लफ्ड ऑफ हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, तो क्या होगा, वो हमारे जो सेल्स हैं अगेन डिवीजन स्टार्ट करेंगे, और डिवीजन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, रीग्रो कर जाएगा, मीन्स कि वो उस रीजनरेट हो जाएगा, वो जो किडनी का पार्ट जो डिस्ट्रॉय हो चुका था, ठीक है, या लिवर का। तो इसलिए क्या है कि इसको हम कहते हैं सेमी परमानेंटली लिवर एंड किडनी सेल्स। नेक्स्ट वन इज द मेनी सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, डेट इज एपिथेलियल सेल्स। कि एपिथेलियल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि जी नॉट फेज के अंदर कभी भी एंटर नहीं होते, और वो कॉन्टीन्यूली एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर कॉन्टीन्यूली डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, और वो है एपिथेलियल cells, and these are very important for short question as well as MCQs. So today we have studied about the cell cycle introduction, firstly its definition, and then there are two phases of cell cycle, interphase and M phase. Interphase is preparatory phase and M phase is the mitotic phase. Next, interphase further consists of three phases: G1, that is known as first gap, S phase, synthesis phase, and G2 phase, that is second gap. In G1 phase, four things are preparing. Number one is protein, number two is organelles, number three is growing size, and number four is synthesis of various enzymes that is required in the next phase, that is S phase, for the duplication of chromosomes. And in S phase, that is synthesis phase, cell duplicates its chromosomes, and as a result two sister chromatids will form. And next one is the G2 phase, and in G2 phase cell prepares proteins, that is very important for mitosis, for the mainly production of spindle fibers. Next is G0 phase, in which cell temporarily or permanently stop dividing and have sent to enter a state of quiescent, that is known as G0 phase. And there are three examples. So today's diary is learn the topics introduction to cell cycle, that is page number 87 to 89. Thank you.